Good evening, everybody. Okay. Well, I'm sharing my screen now. Then we can start the class. Hopefully, you can see my screen, right? My screen is visible to everyone. Good evening, everybody. Good evening, everybody. So I have shared my screen with you people. Okay. So just let me know if I am audible clearly and if my screen is visible to everybody. Just let me know if I am audible clearly and if my screen is visible to everyone. Yes. Poll is not available. Okay, I need to add the poll. But click on yes option if I am audible clearly and if my screen is visible to everyone. Hello, Tanmay. Tanmay. Okay. If you can hear me properly and if my screen is visible to you, click on yes option. Guys, everybody do it fast. Okay. Well, I'm assuming that I'm clearly audible and my screen is clearly visible to everyone. And now I'm starting the class. Organism and population. We are going to revise this particular chapter. Okay. So in the previous class, organism and population ka almost adaptation tak ho gaya tha, right? In today's class, we are going to talk more about that adaptation. Okay. Previously, we have already talked about the hibernation, I mean suspension, migration, okay, conformers, regulators, partial regulators. Okay. In today's class, we'll be looking into all those things in a very precise way. Then we will directly go to the different things, that is your population. Population ke andar directly chalenge. What is population? How the population is increasing, how the population is decreasing, what are the things that is contributing to the population size, what are the things that is withdrawing from the population size, that we are going to talk in today's session. Okay. So without wasting time, let us move to the next slide. And here is a question for you people before starting the class. Question is visible on your screen now. The question is like, according to Allen's rule, the mammals from colder climates have option A, shorter ear, longer limbs. Option B, longer ear, shorter limbs. Option C, longer ears, longer limbs. Option D, shorter ears and shorter limbs. Okay. Well, poll is not available now, so I want you people to answer me in the chat box. Everyone, answer in the chat box. Guys, try to answer to the question in the chat box. Everybody do it fast. Guys, I'm waiting for you people to answer to the question. I'm giving you 1 minute to answer to the question. People, those who are in YouTube, try to answer to the question. Those who are in YouTube, try to answer the question. Yes, those people who are in YouTube, try to answer to the question. Great. Okay. Okay, then I am moving back to the slide now, and let me explain you this particular question. When you are talking about the Allen's rule, according to Allen's, those organisms which are found in the colder climates, they need to minimize heat loss. They need to minimize heat loss. In order to minimize heat loss, what kind of adaptation can we see in case of mammals which are found in the climatic condition? Colder climatic condition. Okay. First one, in order to minimize the heat loss, what they are going to do, they are going to reduce their surface area. In order to reduce the surface area,
Okay, surface area by volume ratio उनको reduce करना पड़ेगा. Okay, and in order to reduce that particular volume and surface, volume by surface area ratio, what they are going to do, they are having shorter limbs, they are having shorter ears or ear pinna, we can say. Okay, so these are certain adaptation we can see. So option D will be the correct answer to the question. Is that clear to everybody? Hello Jayasri. Hello Jayasri, you are late today. Anyway, I am moving to the next slide because it's a very easy thing. So I need not to like waste much time in that particular section. Well, so hello Jayasri. Well, so जो भी चीजें मैंने कल बताया था उसी चीज को बस यहाँ पे एक बार देख लो. Adaptation के बारे में बात करते हैं. So you can see the adaptation in case of aquatic animals, aquatic birds, okay, and plants के केस में अलग अलग adaptation देख सकते हो. जैसे कि ये animal है, camel के केस में, camel के केस में adaptation तुम देख सकते हो. What kind of adaptation it is? Humps develop करता है, and this humps is there for the storage of water. In the humps, it can store, the camel can store water for a long period of time. Okay, and this helps the camel to survive in a condition where they don't get water. I mean, like camels, they are found in the desert condition, and in desert, long way, they are not supposed to get water anywhere. In that situation, to manage with the thirst they are facing now, they will be facing at that time. To manage with the thirst they will be facing at that time, what they are going to develop? They are going to develop, what is seen in the camel? In case of camel, humps are seen. This is the humps, you can see humps. Okay, नेक्स्ट फाइलोक्लेट्स, जैसे मैंने बताया था जेरोफाइटिक प्लांट के केस में फाइलोक्लेट्स होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ओके, दिस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दैट इज गिवन हियर. ओके, एंड इट रिड्यूसेस वाटर लॉस. ये हो गया कैमोफ्लेज. ये कैमोफ्लेज है. I mean the particular animal, this lizard is changing its color according to the environment so that no predator can identify him. Okay, this is another adaptation. In case of polar bear, you can see the adaptation is development of hair on the body which will be acting as an insulator. Hair will be acting as an insulator. जो हेयर होगा वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा और हीट लॉस को रिड्यूस करेगा, मिनिमाइज करेगा. दिस इज अनदर एडेप्टेशन. वन मोर एडेप्टेशन यू कैन सी हियर, दैट इज लोब्ड फीट. इन केस ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स, जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं उनके केस में लोब्ड फीट होता है, लोब होता है उनके फीट में. दैट लोब इज देयर फॉर द स्विमिंग पर्पस, स्विमिंग के लिए वो लोब होता है. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशन, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, बस उसको थोड़ा सा दिखा रहा. वेल, आई एम गोइंग टू द अदर स्लाइड. देखो ये एलेंस रूल के बारे में लिखा गया है. कंगेरू रैट्स, दे आर मैमल्स. ओके, दे लिव इन द cold environment or climatic condition. They develop, or you can see this is a kangaroo rat. Okay, these kangaroo rats are having shorter limb, ear pinna, and body size is smaller. Okay, decrease in surface area, reduces heat loss. That's it. Okay, ये कैसे होगा ये मैं बता सकता हूँ तुमको. देखो उसका एग्जांपल्स पे यहाँ पे दिया हुआ है. A situation, B situation. If you want to explain me, then I can explain it to you. It's very simple. Suppose consider I am giving you hot food. Okay, freshly cooked food which will be hot, and I am giving you in two different container. This is a container. The shape of the container is like this. So I am giving you hot food in this particular container. Hot food मैंने यहाँ पे दिया. और एक कंटेनर है. ओके, वॉल्यूम इज दैट मच ओनली. जितना हॉट फूड यहाँ पे है, इसी कंटेनर के अंदर भी हॉट फूड उतना ही होगा. So this is a plate and that is a I can say different kind of container. Okay, so इधर भी मैंने क्या दिया, इधर भी मैंने दिया hot food. Amount of hot food is same in both case. I mean in case of this particular container, in case of this particular container. Now the question will arise. I'll be asking you the question, in which particular case, यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे food जल्दी ठंडा हो जाएगा. In which situation?
I'm giving the name. This is situation A, this is situation B. In which particular situation food will get normal or food will get cold or heat loss will happen? किस situation में, A में और B में? Very simple, B में, because here the surface area is more. As the surface area is more, heat loss will be more. Okay, so that is what this particular Alan is trying to explain us. If surface area will be more, okay, as a result, what is going to happen? Heat loss will be more. Okay, that is why, according to Allen's, organisms who are found in the colder climate region, they have shorter limbs, shorter ear pinna, and body size also small. Okay, so this is all about Allen's rule. I'm going to the next slide now. This is adaptation of desert plant, जो कि मैंने बताया phylloclades के बारे में. Okay, ये है phylloclades अपना ओपुंसिया में होता है, लीव्स नहीं होता है. थिक क्यूटिकल होता है. दिस इज sunken stomata होता है. केम photosynthetic pathway closed during the daytime. I mean stomata will remain closed during the daytime and it will remain open during the night time. ये भी बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, अगर तुमको याद है तो याद कर लो. The stomata is going to open during night time and it is going to close during daytime. Okay, during night time stomata will remain open and it is going to absorb carbon dioxide from outside. So it is going to intake the carbon dioxide. That carbon dioxide will be converted into a different form, that is malate. Carbon dioxide is going to get mixed with the phosphoenol pyruvate, PEP. Okay, and that phosphoenol pyruvate along with carbon dioxide is going to synthesize a 4 carbon containing compound, that is your oxaloacetic acid. And that oxaloacetic acid get converted into malate. Malate में वो convert हो जाता है. Okay, and it gets stored in the vacuole it will be observed and stored in the vacuole during the night time. When daytime will come, at that time daytime जब हो जाएगा, so during day sunlight will fall upon the plant and chloroplast will absorb the sunlight. Chloroplast जो है वो sunlight को absorb करेंगे, and that sunlight, in presence of that sunlight, this malate which was storing the carbon dioxide, this malate is going to get converted into, जो malate होगा वो again अभी convert हो जाएगा किसमें? It is going to get converted into pyruvic acid and it will release. Pyruvic acid में ये convert हो जाएगा और release करेगा क्या? It is going to release carbon dioxide. Malate कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, ओके, और पायरुवेट में, एंड जब कन्वर्ट होगा तो एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूटिलाइज्ड बाय रुबिस्को एंड दैट रुबिस्को एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे गेट मिक्स ऑफ एंड C3 cycle will continue there. So this is what going to happen in case of chem photosynthetic pathway. ठीक है, ये 11th का जो चीजें है मैंने बताया, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया. अगर समझ आया तो सही है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम जब 11th का पढ़ेंगे फिर से रिवाइज करेंगे तब पता चलेगा. ये होता है केम पाथवे. क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. केम का फुल फॉर्म होता है क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म आया समझ में सबको? So this is all about your chem pathway. ये कुछ adaptation होता है desert plants के केस में. I am going to the next slide. Okay, adaptation of the mammals. Mammals have blubber. Mammals have blubber. These blubbers are nothing but the thick fat layer. These blubbers are nothing but the thick fat layer. This thick fat layer will be acting as an insulator. ये किसकी तरह काम करेगा? Insulator की तरह काम करेगा. It will be acting as an insulating device. So ये काम करेगा. Sorry guys, previously ये सही था. It is going to work as an insulator. Insulator की तरह ये काम करेगा, insulating device की तरह काम करेगा. You might have heard that those people who are having fat, I mean thick people, fatty people, they generally don't feel cold. Okay, and I can say one more example, like in your school you might have observed that certain students who are fatty, जो fatty students होते हैं, they generally feel a lot of heat during summer day.
and sweating will happen in them. उनके केस में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, बहुत ज्यादा गर्मी उनको महसूस होती है. Why? Because they have fat in their body, fat deposition in their body, and that fat deposition, that fat is acting as an insulator, which is minimizing the heat loss. And as a result, when the heat loss is not happening, that result in somehow the heat needs to be removed from the body. That is why sweating happens. That sweating cools down the body. Okay, so this is all about your adaptation in mammal. जैसे कि ये mammals में, okay, aquatic mammals के केस में, like seals के केस में have a thick layer of fat blubber below their skin that act as an insulator and reduces loss of body heat. As they are the aquatic mammals, they will be surviving in the polar region. This particular ये जो mammals है ना, ये polar regions में देखने को मिलते हैं, खास करके cold water में. कोल्ड वाटर में ये सरवाइव करते हैं, एंड कोल्ड वाटर में उनको ठंड से बचाने के लिए ब्लबर होता है. दिस इज अनदर एडेप्टेशन. एलेंस रूल के बारे में बताया मैंने अभी कुछ देर पहले. सो दैट्स इट. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. एडेप्टेशन के बारे में और कुछ आर्की बैक्टीरिया में एडेप्टेशन होता है. दे कैन विथस्टैंड हेवी टेम्परेचर, दे कैन विथस्टैंड हेवी एसिड, दे कैन विथस्टैंड ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट आल्सो. So thermoacidophils, methanogens and halophils उसके basis पे, which can withstand methane gas, they are methanogens, which can withstand both temperature as well as acidic condition. Those are called thermoacidophils. Okay, they have specific type of protein which help them to resist high temperature, methane gas and salt concentration specifically. Okay, राइट. हमेशा से याद रखना थर्मस इक्वाटिकस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. थर्मस इक्वाटिकस इज द बैक्टीरिया which is going to is a thermoacidophilic bacteria. Thermus aquaticus is a thermoacidophilic bacteria from where Tech polymerase, Thermus aquaticus polymerase enzyme is taken out, is extracted, and this Tech polymerase is used. It is a high temperature withstand enzyme, and that is why it can be used, or it is used in PCR technique, where we are applying almost like during 95 degrees Celsius, 70 degrees Celsius. Okay, so our DNA polymerase enzyme is not that much resistive which can withstand this much of temperature. So that is why Tech polymerase enzyme, Tech polymerase enzyme is a DNA polymerase enzyme which is taken for the PCR technique. PCR technique के लिए इसका use किया जाता है because it can withstand high temperature. Okay, because it is found in Thermus aquaticus bacteria. Okay, well, so this is all about few more adaptations. जैसे कि कुछ fishes होते हैं जो कि Antarctic region में रहते हैं, जहाँ की temperature below 0 degree Celsius होता है. This is freezing temperature, and in this freezing temperature also they are surviving. Their blood is not getting freezed. उनका blood जो है वो लिक्विड होता है. राइट, ब्लड इज ए लिक्विड काइंड ऑफ थिंग, सो इट मस्ट हैव बीन फ्रीज्ड. ये फ्रीज हो जाना चाहिए. ओके, बट दिस पर्टिकुलर फिशेस दे आर हैविंग एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन. एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है जो कि इनका ब्लड को फ्रीज होने नहीं देता है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ एडेप्टेशन. ओके, राइट. सो many adaptations are there or based on the area where they are living. Organisms have different kind of adaptation based on the area where they are living. This is physiological and biochemical adaptations. You can see at high altitude, place above 3500 meter, we feel altitude sickness. If you go there, we'll be feeling altitude sickness. What kind of altitude sickness we are going to feel? We'll feel like if we cannot breathe, okay, difficulty in breathing. Just like in case of asthma patient जो होते हैं उनको difficulty होता है breathing में, right? Whenever they come in contact with certain I can say allergens, okay, they feel difficulty in breathing. उनका सांस फूलता है. That kind of problem we will be facing if we go at high altitude. जब बहुत ज्यादा हाइट में चलोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज मोर देन 3500 मीटर, अगर चलोगे तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वी आर गोइंग टू फील दिस वन, राइट? ओके, jet symptoms like nausea, heart palpitations, fatigue, this is due to low atmospheric pressure. So body doesn't get enough oxygen. As there is no
or very less atmospheric pressure, we are not going to get atmospheric pressure nahi hai. If atmospheric pressure is not there in much quantity, so atmospheric pressure is the only thing which is helping us to inhale and exhale. Exhale is a you know, like exhale is a process which we are doing by expenditure of energy, but inhale is not happening by expenditure of energy. Remember this one. This is a very important thing. When we are exhaling and inhaling, exhalation is happening by expenditure of energy, but inhaling is not an energy expensive process. It is happening because of the density gradient. Pressure के वजह से, density के वजह से, pressure के वजह से we are inhaling, because the pressure gradient is very much like quite effective outside, and because of that we can inhale because of that pressure. But if you go to high altitude, pressure will not be maintained, low pressure will be there, and it is why you will be feeling lots of altitude sickness there, right? That is why. But those people who are surviving in that high altitude region, they don't face any problem, because they are surviving from the beginning. Since their birth, they are there only. Those organisms, those humans are there only. Okay, और उनके केस में अपने केस में कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा? They will be having more RBC count in order to hold the air holding capacity को बढ़ाने के लिए उनका RBC count ज्यादा होता है as compared to us. So gradually we acclimatize to the situation and the body competes with the low oxygen availability by the increasing of RBC and breathing rate. So what is going to happen? RBC and breathing rate will be increasing. This is what happened in case of the people who are in the high altitude. उनके केस में ये normal होता है. But if we move to that particular region, we will also get adequate or get acquainted with that particular environmental condition. Okay, hill region पे जो होते हैं उनका RBC content ज्यादा होता है अपने कंपेयर में hilly region में जो होते हैं. So this is your physiological adaptation. Okay, so वो था अपना physiological adaptation. मैं थोड़ा सा pause कर देता हूँ स्क्रीन को और फिर इसके पास आता हूँ इस क्वेश्चन को. चलो अभी क्वेश्चन का आंसर कर दो. क्वेश्चन इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, राइट? व्हिच एनिमल इज कैपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट? फैट को ऑक्सीडाइज करके कौन सा एनिमल वाटर ऑब्टेन करता है? ओके, चलो मेरे पास तो अभी पोल अवेलेबल नहीं है, सो आई वांट यू पीपल टू आंसर टू द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. Which animal is capable of obtaining water by oxidation of fat? Fat oxidation करके कौन सा animal water obtain करता है? Yes, Jayasri. Great, Jayasri. So, oh yeah, very good, Jayasri. Exactly, got it, Jayasri. Okay. So yeah, that's all, right? So if you are talking about this particular question, animal is capable of obtaining water by oxidation of fat is your kangaroo rats. They will be obtaining water by oxidizing their body fat. Okay, because there is no much water available in the desert area. That's why in order to minimize or in order to meet their water requirement, what they are going to do, they are going to oxidize their fat. They will be digesting or oxidizing their fat in order to obtain water. Okay, earthworm नहीं, ये तो वैसे भी रहता है, rabbit भी नहीं, mole भी नहीं. Okay, kangaroo rat will be the correct answer. Okay, behavioral adaptation में जो कि मैंने बताया था basking के बारे में, here you can see this is desert lizard. Okay, desert lizard जो होते हैं ये क्या करते हैं? बास्किंग करते हैं. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ये बास्किंग कर रहा है, सनलाइट में आकर के बास्किंग कर रहा है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडिक्वेट होने के लिए. लाइक बास्किंग कर रहा है, आफ्टर दैट फिर ये शेडो में चला जाएगा. दिस इज हाउ दे विल बी बास्किंग. ये समझ सकते हो. तो नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या है? इट्स वेरी सिंपल. ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which will be belonging to the same species, reproductively isolated and interlinked with one another. They will be
of same species, they will be of same species, one second, reproductively isolated and interlinked with one another. If you want me to write this one once again, I can write it, no problem. So they will be interlinked, same species, they will be belonging to the same species, belongs to the same species, they will be interbreeding same species and reproductively isolated, in the sense interbreeding, reproductively isolated, reproductively isolated means interbreeding, एक दूसरे के साथ हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. Okay, so this group of organism are called as a population. A group of organism who are reproductively isolated, interbreeding with one another, and they belong to the same species are called as your population. Okay, well, a group of individuals of same species that live in a given geographical area share or compete for similar resource and potentially reproducing. Interaction करेंगे, same species के होंगे और reproduce करेंगे, तीन चीजें. Okay. Population ecology is some different kind of thing. Population ecology is the most important area and it is linked with the ecology of population genetics and evolution. Okay, so इसके बारे में देखेंगे. पहले ये समझ लो कि population का definition क्या है. Three things: reproductively isolated, a group of same species, I mean group of individual with same species, and the last one is your potentially they will be competing with one another for the same resource, interacting with one another, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. Okay, now we'll be talking about the attributes that is contributing the population size. I mean population attributes. Population के साथ क्या क्या चीजें related है. First one is your birth rate, death rate, age pyramid, sex ratio and population density. We'll be talking about each one of these separately. Birth rate क्या होता है, death rate क्या होता है. When you are talking about a particular specific individual, तो उस इंडिविजुअल का बर्थ होता है, डेथ होता है, या फिर उस इंडिविजुअल का सेक्स होता है, आई मीन वेदर इट इज ए मेल और फीमेल, वो होता है. बट व्हेन यू कम टू द ग्रुप, आई मीन पॉपुलेशन की जब बात करते हो, सो इंडिविजुअल लेवल में वो क्या था. अगर हम लोग बात करें, वन सेकेंड, आई कैन नॉट फाइंड दिस साइन. Okay, when you are talking about individual, when you are keeping it at individual level, individual, second यार, जब इंडिविजुअल लेवल में इसकी बात रखते हैं तो इंडिविजुअल में क्या होता है, वो फिर नॉर्मल बर्थ और डेथ रहता है, नॉर्मल बर्थ और डेथ रहता है. ओके, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओके, नॉर्मल बर्थ और डेथ रहता है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी पॉपुलेशन, जब बात बिगड़ के तो नहीं, बात जब बढ़ करके पॉपुलेशन तक आ जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में आ जाता है, तो ये बर्थ और डेथ चेंज हो जाता है. ये बन जाता है बर्थ रेट और डेथ बन जाता है डेथ रेट. दैट्स इट. ओके, राइट. सो लेट अस टॉक अबाउट द बर्थ रेट. बर्थ रेट इज नथिंग बट द एडिशन और number of individual added to a population in a given period of time in a given geographical area. That's it. Okay, so चलो बात करते हैं एक एक करके. बर्थ रेट से शुरू करते हैं. बर्थ रेट आर द बर्थ मीन्स न्यू बॉर्न. Okay, birth rate is number of new individual born, number of new individual born in a population in a given time period in a geographical area. Okay, number of individual born in a specific geographical area in a given time period is known as birth rate. Okay, as you can see here, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, consider 20 individuals were there initially. What happened? 8 new individual they born. 8 new individual पैदा हो गए. So population size now increased to 28. Population size increase हो गया 28, क्योंकि 20 individual पहले से थे और 8 इंडिविजुअल ऐड हो गए, तो टोटल साइज हो गया 28. तो अभी नाउ द बर्थ रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय
The formula, that is total number of newborn divided by total population, I mean old population. That is your birth rate. Okay. और we are changing the calculation. अगर calculation को change कर दें हम लोग, थोड़ा सा change कर देते हैं calculation को. So what I am doing, I am adding, instead of 8 individual, what I am doing, 10 new individual यहाँ पे जोड़ देते हैं. 10 new individual आ गए. So total number of individual will be 30. अब total हो गया 30. Okay. So now if you count the birth rate can be calculated by total number of newborn in a population in a given time period in the geographical area. So total number of newborn is equal to how much? Is equal to 10 divided by total population. Initially old population को count करना है. Initially कितना था? Old population था 20. So equivalent to 1/2. Equivalent to 1/2, or which is equal to 0.5. 0.5 हो गया. So this 0.5 is the birth rate. This indicate that one individual in every single individual, or every single individual have a capability in this population. Every single individual has a capability to produce in this particular population. Every single individual have a capability to produce at least 0.5 new individual. मतलब half of the new individual को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक इंडिविजुअल के पास इतना कैपेसिटी है कि हाफ ऑफ द न्यू इंडिविजुअल को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये हो गया उनका ऐसे, राइट. आई मीन 2 इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है. और अगर न्यू बॉर्न मान के चलो पहले से इतना से 20 थे और न्यू बॉर्न आकर के ऐड हो गए अगेन 20. सो एक इंडिविजुअल एक को प्रोड्यूस किया, 20 थे 30 हुआ तो 1.5 को प्रोड्यूस किया. सो दिस इज बर्थ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है. बस ओल्ड पॉपुलेशन को नीचे डाल दो, न्यू बॉर्न कितने उसको ऊपर रख दो. इट इज राइट. कैपेबिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस. Okay, one individual is capable to produce 0.5 new individual in a given time period in this population in average. Next is your death rate. Death rate means natural death. Number of individual dying in a population, number of individual dying in a population in a given time period in a given geographical area. Total 20 इंडिविजुअल थे, 4 इंडिविजुअल का डेथ हुआ, अभी बचे कितना है? 16 बचे हुए हैं. काउंट करना है डेथ रेट. सो डेथ रेट के लिए नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 20. नंबर ऑफ डेथ कितना है? 4 डिवाइडेड बाय इनिशियल और ओल्ड टोटल. ओल्ड टोटल को काउंट करना है. कितने थे? 20. सो डेथ रेट 0.2. डेथ रेट इज 0.2. दिस इज इंडिकेटिंग दैट आउट ऑफ 20 इंडिविजुअल, आई मीन 20 इंडिविजुअल से 4 का डेथ हुआ है 1 साल के अंदर. It means this is indicating that in every one individual, at least 0.2 individual is dying. 0.2 individual is dying. At least 0.2 individual is dying. Is that clear to everybody? कम से कम 0.2 इंडिविजुअल मर रहे एक इंडिविजुअल के अंदर. दिस इज डेथ रेट, राइट. ओके. नेक्स्ट इज योर सेक्स रेशियो. आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस वन. मेल 20. टोटल इंडिविजुअल कितने हैं? 20 है. ओके. और उस पॉपुलेशन के अंदर टोटल इंडिविजुअल 20 है, पॉपुलेशन साइज 20 है. मेल जितने हैं इज टू फीमेल कर दो, बस मेल इज टू फीमेल कर दो, वो अपना रेशियो मिल जाएगा. मेल इंटू फीमेल रेशियो 3:2. आई मीन एवरी 3 मेल में 2 फीमेल होते हैं. एवरी 3, आई मीन इन टोटल 5 नंबर ऑफ पीपुल में 3 जो होते हैं वो मेल होते हैं, और एवरी 5 इंडिविजुअल के केस में 2 जो होते हैं वो फीमेल होते हैं. इन एवरी 5 नंबर ऑफ इंडिविजुअल 3 इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड और काउंटेड एज ए मेल इंडिविजुअल एंड 2 will be counted as a female individual. It is 60:40. ये रेशियो. Is that clear to everybody? आया समझ में सबको? So this is all about your sex ratio.
चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्स रेशियो भी तो आसान सा चीज है। नेक्स्ट इज योर एज पिरामिड विच इज क्वाइट इंपोर्टेंट, ठीक है, एक्सपेंडिंग, ओके, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। ओके, चलो इसको इरेज कर देते हैं, देख लो, ये आसान सा चीज है, मतलब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्या जयश्री, व्हाट डू यू थिंक? Well, it is the structure obtained when the age distribution, right, or percentage of individual of a given age or age group is plotted in the population. So this age pyramid can be of three types: when a population is expanding, when a population is stable, and when a population is declining in near future. Is that clear to everybody? I mean, like, yes, exactly. So if you look into a particular population, three different kind of age group of individual are seen. First age group, सिंपली पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें तीन ग्रुप ऑफ एज देखने को मिलता है: पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ओके, राइट। बेस्ड ऑन दैट, number of individual in pre-reproductive phase, reproductive phase and post-reproductive phase, the population or age pyramid can be, population can be growing type, stable type or declining type, and based on that itself age pyramid can be also is how, like, expanding type, stable type or declining type. One second. Okay, so what I'm trying to explain you people is like, see, when a population size will be growing, कब एक population size grow करेगा? जब birth rate will be more than death, जब birth rate death rate से ज्यादा होगा, number of individual which is borning will be more than the number of individual which are dying, तब जाकर के ये होगा। Is that clear to everybody? आया समझ में सबको? ठीक है, so birth rate is going to increase or birth rate is going to be more than the death rate, so ये हो सकता है। So wherever birth rate is more, I mean number of individual, birth means क्या, birth होने के बाद उनका birth हुआ तो वो individual किस में आ जाएगा? birth का मतलब the individual is taken in the pre-reproductive phase, वो reproduce नहीं कर रहा है, I mean that particular individual is going to reproduce in near future, and when this particular individual is going to reproduce in near future, this individual will be producing more number of individual, as a result population will be increasing. So first one is expanding. Here you can see number of pre-reproductive phase में, pre-reproductive age group में जो number of individual है वो ज्यादा है, इस age group में जो number of individual है वो ज्यादा है। one second guys. Okay, so this is what is going to happen. Well, I'll be explaining you about this particular expanding, stable and declining. Here what is happening, number of individual which is taking birth is more, birth rate से death rate ज्यादा है, तो
sorry, birth rate is more than the death rates. That's why it is expanding. The population is going to expand because these individuals which are in pre-reproductive phase in near future, they are going to reproduce. As they will be reproducing, so फिर नीचे जो न्यूबॉर्न आएंगे फिर वो उनका नंबर ज्यादा होता जाएगा, because these are going to reproduce in near future. When they will be reproducing, what is going to happen? यहाँ पे नीचे जो individual आएंगे वो फिर से ज्यादा आते जाएंगे ऐसे. Newborn will be like this only, I see. So that's why it is expanding. Gradually, the this particular pyramid is increasing, expanding. Next one is stable, where individual, अब यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा किसके किसके बीच में कंपेयर करके ये बनाया गया है. When you are comparing between the reproductive and pre-reproductive, किसके किसके बीच में reproductive and pre-reproductive को कंपेयर करो. We are going to compare here two things. Compare between the individual number of individual which are number of individual in pre-reproductive phase and a reproductive phase. Reproductive और pre-reproductive phase में जो individuals है उनको कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद तुमको जो मिलेगा वो तुमको आइडिया देगा. अगर रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिविजुअल का नंबर ज्यादा हुआ रिप्रोडक्टिव फेज से, तो ये हो गया अपना एक्सपेंडिंग. वेरी क्लियर. ओके, प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव हुआ. ओके, सो फिर ये हो गया अपना स्टेबल. एंड इफ प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव, तो फिर ये हो गया अपना डिक्लाइन. वेरी क्लियर, खत्म, बात खत्म. सो उस चीज को देख लो. यहाँ पे एक्सपेंडिंग में क्या हो रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव आर मोर देन रिप्रोडक्टिव, इसीलिए ये एक्सपेंडिंग है. स्टेबल के केस में प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले आर इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्टिव फेज, इसी की वजह से ये स्टेबल है. ओके, डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव वालों का जो नंबर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव वाले. So they are going to reproduce less in near future. इसी वजह से the population size is going to decline. This many number of individuals are reproducing this many number of individuals. When they will be reproducing in near future, they are going to reproduce, but they will again reproduce very less number of individuals. In this way, the population size will go on decreasing. So compare between pre-reproductive and reproductive. Doesn't matter about the post-reproductive phase. They are in the population just to contribute their number. They are neither going to increase the population size, they are neither going to decrease the population size. Most effective thing is your reproductive and post-reproductive, pre-reproductive individuals. Okay. Well, I am moving to the next slide now. Next is your population size or population density, you can say. Okay, so number of individual of a species per unit area or volume is called as your population size or population density. Okay, population size or population density is nothing but how many number of individuals are surviving in a given geographical area is called as your population density or population size. Okay, right, here you can see. Here you can see also, like population density of Siberian cranes at Bharatpur wetland is in any year is less than 10. It is millions of chlamydomonads in pond. Okay, population size is also measured in percentage cover or biomass. Okay, 200 Parthenium plants and huge banyan tree are seen. In such cases, percentage of cover or biomass is meaningful to the importance of banyan tree. Okay, you can see here so many number of individuals will be surviving in the banyan tree, right? But the banyan tree itself is a single organism, but it is covering most of the area and it is providing most of the biomass. That's why biomass is also essential for the calculation of the population density, you know. Okay, so here you can see यहाँ पे population density ज़्यादा है, यहाँ पे population density कम है. ओके, चलो इसको हटा दो. पॉपुलेशन ग्रोथ की बात किया जाए, सो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन साइज और द इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज योर पॉपुलेशन ग्रोथ. इट डिपेंड्स अपॉन फूड अवेलेबिलिटी, predation pressure and weather, environmental condition, predation pressure as well as your food availability. You can see here.
एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है इसका, यू कैन सी एनवायरमेंटल फैक्टर, predation pressure and weather, three things. Okay, changes, these three things is going to contribute in the population growth, right? Changes in population density give some idea about population, whether it is flourishing or declining. Changes in the population density give an idea about the population growth. Okay, so population density is contributed by many factors like natality, mortality, okay, माइग्रेशन में इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, सो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में. सो फोर बेसिक प्रोसेस दैट फ्लक्चुएट द पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज नाटालिटी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ रेट, ओके, मोर्टालिटी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डेथ रेट, ओके, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन. Immigration is number of individual added to the same species or same group of population, okay, and immigration is exiting out of the population, that's it. So natality जो है बर्थ हो रहा है, मतलब ये भी ये population size को बढ़ा रहा है प्लस, okay. Mortality, it means number of individual dying in a population in a given time period, that rate is your mortality, I mean death rate. So death मतलब पॉपुलेशन से इनका नंबर रिड्यूस हो रहा है तो ये माइनस कटेगा. इमाइग्रेशन, दे आर मूविंग आउट फॉर वेरियस पर्पस, मूविंग आउट ऑफ द पॉपुलेशन और लिविंग द पॉपुलेशन, इट मींस दे आर आल्सो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, सो ये भी हो गया अपना नेगेटिव, माइनस में चला जाएगा, राइट. व्हेयरएज सॉरी गलत बता दिया, इट इज मूविंग इन. इमाइग्रेशन मींस मूविंग इन, इमाइग्रेशन मींस मूविंग इन, I for in, I for immigration. So it is going to contribute to the population size, whereas immigration means E means exit. Exit कर रहे हैं इन लोग population से. As they are exiting out of the population, it means ये reduce हो रहा है, right? So that's it. Okay. Okay, so natality and immigration is going to contribute to the population size, whereas mortality and immigration is going to remove from the population size. ये contribute करेगा और ये reduce करेगा. These two things is going to contribute the population size, whereas this is going to reduce the population size. It's very clear. Okay, आया समझ में? सब आसान सा चीजें हैं, ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इजी है, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारा चीजें है, वो सारा चीज देख लो जो भी मैंने बताया. इमाइग्रेशन ऐड करेगा, 1 सेकेंड, इमाइग्रेशन ऐड करेगा, इमाइग्रेशन एंड नाटालिटी ऐड करेगा, मोर्टालिटी डिलीट करेगा, इमाइग्रेशन डिलीट करेगा, ठीक है. जब सबको ऐड कर दोगे तो फिर अपने को मिलेगा पॉपुलेशन डेंसिटी व्हिच कैन बी काउंटेड हियर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. एनटी रिप्रेजेंट हियर, ये जो एनटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन एट द गिवन टाइम, करंट पॉपुलेशन वी कैन से, पॉपुलेशन एट टाइम टी वी कैन से, और गिवन टाइम प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट के टाइम पे पॉपुलेशन, ठीक है. ओके, एंड nt plus 1 represent and nt plus 1, 1 second guys, right, n t plus 1, sorry, so t plus 1 represent population after time t, population after टाइम t plus 1. सो कुछ टाइम बाद पॉपुलेशन का क्या होगा, ठीक है. सो इनिशियल पॉपुलेशन ये था, उसके साथ अभी ऐड हो जाएगा क्या क्या, ऐड जो चीज को होना है, b प्लस i ऐड हुआ, माइनस कर देना है बाकी दोनों को, d को और e को माइनस कर दो, सो फिर हमको ये इक्वेशन मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है. सो b प्लस i करो और वहां से माइनस करो इन दोनों को, मतलब
डी को माइनस करो एंड ई को माइनस करो, इसको अगर ये कर दोगे ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन, बस इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, ठीक है। और इसके साथ ऐड करो अपना पहला वाला पॉपुलेशन को, यहाँ से मिलेगा अपने को न्यू पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t+1, दैट्स इट, दिस इज योर इक्वेशन। ओके, ये है अपना इक्वेशन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Exponential. Now growth models. Growth model can be of two types. One is your exponential growth and second one is your logistic growth. So if you are talking about the growth, population growth, अभी मैंने बताया कि population growth किस होता है, उसका जो attributes है कि कौन कौन सा चीज है जो कि population growth को बढ़ावा देता है, that is natality, mortality, ये सारा चीज। okay, हाँ जयश्री, I'll be sharing, don't worry, I'll be sharing. Or you want me to stop in the particular slide so that you can take the screenshot? If you want that, I can do that also. Okay, I'm going back to the previous slide. Take a screenshot. जल्दी से screenshot ले लो. Let me know after noting it down. अगर नोट हो गया तो बता देना. Is it done? If it is done, let me know. Okay, I am moving to the next slide now. So now population growth. So growth of the population happens, but growth of population happens in two different ways. Two different models of the growth have been explained, and that is your first one is your exponential growth, okay, and second one B, that is your logistic growth. Logistic growth. Okay, when you are talking about exponential growth के बारे में अगर बात करें, here the resource availability will be unlimited. I mean there will be no limitation to the resource availability. As there is no limitation to the resource availability, resource is unlimited in quantity, so the population size will be increasing continuously without any break, without any stop, and that growth is called exponential growth, right? So this kind of growth is shown only during the experimental condition. ये रियल में नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट में होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम लोग रिसोर्स प्रोवाइड करते जाते हैं, फूड प्रोवाइड करते जाते हैं, ओके, और नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता जाता है. सो दिस हैपेंस व्हेन द रिसोर्सेस लाइक फूड एंड स्पेस, resources like food and space is unlimited. Okay, ये unlimited होता है. Unlimited resource जब होता है तब ये चीज आया समझ में सब. Okay, resources are unlimited होता है resource. Okay, each species shows its full initial like innate potential to grow in the number, as they are having a huge amount of resources, they don't have any issue, they have space and everything is like all set. You don't have any tension, any kind of anything in your mind, like there is no worry about the food, no worry about the space, no worry about the property, nothing is there in your mind, no any kind of tension is there in your mind. Then in that situation, organism what they do, they only enjoy their life. They will be reproducing continuously and they will be growing their population size. Is that clear to everybody? Okay, so this is what is happening here. So there will be nothing, so they will be growing exponentially or geometrically. Only reproduction उन लोग करते रहेंगे, reproduction करते रहेंगे. Okay, and this happens
not in the natural condition. This happens in, this is seen in experimental condition. ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में देखने को मिलता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में ये नहीं होता क्योंकि रिसोर्स तो नेचुरल एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड नहीं होता, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, फूड अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। Okay, this is all about your exponential growth. In the next section we'll be talking about this is your exponential growth. See, initially when the individual will be growing, initially उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनिशियल टाइम स्लो होगा, बट लेटर ऑन सडनली इसका नंबर हाइक करेगा और ऐसा ये ग्राफ शो करेगा जब ये when the number will hike suddenly, that phase is called as your acceleration phase, and when it was slowly growing, that phase is called as your lag phase. ये क्यों होता है ये भी बता सकते हैं। देखो, consider initially one individual was there, okay, after successful reproduction two individual were formed. ठीक है, हम लोग ले लेते हैं कोई भी लोअर ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं, लोअर एनिमल्स लाइक एमीबा को ले लेते हैं, बाइनरी फिजन होगा। Two individuals में, these two individuals they are going to do reproduction by binary fission. So amoeba की बात कर लेते हैं ना, amoeba का ही काउंट कर लेते हैं। So two individuals they are going to reproduce, और जब इनका binary fission होता है तो कितना प्रोड्यूस हुआ 4, 4 से कितना प्रोड्यूस हुआ 8, 8 से कितना प्रोड्यूस हुआ 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 308, sorry, so 125, sorry 128 से ये 886 और 56, 256, okay 256 से 250, 250, 500, 512. So just think, यहां से यहां तक अप टू 16 नंबर जब इंक्रीज किया तो एकदम स्लो था, नंबर जब इंक्रीज किया यहां से यहां तक ये स्लो ग्रोथ हो रहा था, और इस फेज को इसीलिए कहा गया लैग फेज, इस फेज को इसीलिए कहा गया लैग फेज। और उसके बाद से जब 16 से आगे बढ़ा ये 32, 64 होते गया, सो यहां से यहां तक देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम 32 टू 512, तो यहां से यहां तक 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन में ये 32 तक पहुंचा, 5 डिवीजन में 32 तक पहुंचा। हाउ मेनी डिवीजन? 5 डिवीजन में 32। नेक्स्ट 5 डिवीजन आई मीन 32 से आगे अगर बात करें 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट 4 डिवीजन में ये 512 बन गया। जस्ट थिंक, सो दिस फेज इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सलरेशन फेज। 512 फिर एक बार डिवाइड करेंगे ये लोग तो डिवाइड करके कितना बन जाएंगे 1024। जस्ट थिंक, सो इसीलिए इसको लाइक एक्सलरेशन फेज कहा जाता है। और ये जे शेप कर्व दिखाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जे शेप का ग्राफ बनेगा और जे शेप का ग्राफ में पहले लेग फेज आएगा, उसके बाद एक्सलरेटरी फेज और एक्सलरेशन फेज आएगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। जय श्री। ये जे शेप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से तुमको। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछो। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करने की तरफ मूव करेंगे। कोई डाउट्स है तो पूछो जयश्री। डू यू हैव एनी डाउट? यस और नो? नो डाउट्स। ओके, सो डोंट वरी, इन द नेक्स्ट क्लास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद हम लोग बात करेंगे अनदर ग्रोथ, दैट इज योर सिग्मोइड कर्व वाला ग्रोथ। दैट इज नेक्स्ट वन अपना जो आएगा सिग्मोइड कर्व वाला ग्रोथ मॉडल, जिसका नाम था अपना क्या एक्सपोनेंशियल, एंड दैट इज, अरे नाम भूल रहा हूं, व्हाट वाज दैट, लॉजिस्टिक ग्रोथ, सॉरी, यस लॉजिस्टिक ग्रोथ। आफ्टर दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई एम प्लानिंग टू मूव टू द नेक्स्ट। इकोलॉजी के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं, इकोलॉजी का सारा सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इकोलॉजी इज इंपोर्टेंट। ओके, बिकॉज इकोलॉजी इज कंटिन्यूअसली इग्नोर्ड बाय एवरीबॉडी। एवरीवन थिंक दैट कि इकोलॉजी इजी है, बट इकोलॉजी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इजी नहीं है।
सो दैट इज वाई इकोलॉजी को पहले कंप्लीट करेंगे फिर बाकी सारा, ठीक है? ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू देन, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट वी कैन एंड द क्लास, थैंक यू, जय श्री, बाय बाय, ओके बाय।